ऑल्सो राजस्थान से वीडियो ऑडियो आया नहीं है। सेम Okay. सेम सेंट्रल बैंक, same financial this thing, same position only. Yeah, Okay. yeah. And another girl came online, and for her, it was okay because she is from Jammu. Okay. Rajasthan girl now Jammu is connected, but she is in Rajasthan is Jammu. not connected. Yeah. So आपका राजस्थान से कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपको किस तारीख का इंटरव्यू है? Sir, 29th. Excellent. 29th in which place? Sir, Jaipur. Jaipur में interview. Good. Now, are you ready? Shall we start? Sir, yes, sir. Can I answer questions in Hindi? हाँ, why not? आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं और बट ओनली थिंग इज एक क्वेश्चन को आधा इंग्लिश आधा हिंदी में मत बोलिए, पूरा हिंदी में बोल दीजिए। समझ गया? Okay, sir. लेकिन Okay, sir. कई आप बाय चांस आप अंग्रेजी में शुरू कर दिया, कई जहां पर 1 और 2 वर्ड्स आप हिंदी में बोल सकते हैं, उसमें तो कोई हर्जा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Okay, sir. And you see the way they are asking questions. As you enter, you'll be wishing them good morning, good evening. Then you'll be taking your seat after they are permitting you. At that time, if they ask question in English, आप अंग्रेजी में आंसर करने से बढ़िया है। Okay. Could you understand what I said? आपको अभी Yes, sir. If they are, अगर वो मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को आंसर इंग्लिश में देना चाहिए। फर्स्ट क्लास, यही है। अभी हम आपको हिंदी में पूछ रहा हूँ, मिस्टर बात्रा, आप आपका बारे में बता दीजिए। सर, मेरा नाम आशुतोष भात्रा है। मैंने 20 इयर्स की एज में मेरा सीए फाइनल एग्जाम क्लियर किया है सर। ओह ग्रेट। सर, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। सर, मेरी हॉबीज में मेडिटेशन और काइट फ्लाइंग इंक्लूड होते हैं और सर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मदर है। वेरी गुड। अच्छा जी, आप तो इतना बढ़िया लड़का है, बड़ा 20 साल में आपने इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंप्लीट करा दिया। आप क्यों थोड़ा अंग्रेजी बात करने का प्रैक्टिस नहीं किया? Sir, actually, I am practicing on improving myself in English, but I am not comfortable to explain myself properly in English. That's why I have chosen to give this interview. वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, बट a chartered accountant, उनका expectation is 50% at least you must be able to communicate well in English. Sir, actually मेरे को कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा वर्बल के अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन है, तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि उसे ओवरकम कर। अच्छा, can we attempt now, because this is only a mock interview, and why don't you practice, try whether you can talk to me in English, so that you will get the further confidence that is needed there. I don't mind you are talking in Hindi, I can follow Hindi, I can talk to you in Hindi. पहले we will have it in Hindi, after which we will have another 10 minutes in English. Okay sir, sure sir. Very good. अच्छा जी, आपने तो आपका फैमिली का बारे में कुछ बताइए। सर, मेरी फैमिली में मेरे दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं और मेरी माँ है। मेरे दादाजी गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हैं, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर है और मेरी मदर जो है वो होम मेकर है, और सर मेरी सिस्टर है जो वो भी सीए हैं। अच्छा, आपका पिताजी एस्ट्रोलॉजी में है? जी सर। अच्छा, आजकल का ये एस्ट्रोलॉजी कैसे ओल्ड मेथड में चलाता है और ऑनलाइन में भी एस्ट्रोलॉजी देते हैं? सर, ओल्ड मेथड में ही है। ऑनलाइन के लिए मैंने सजेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने अभी डिनाई कर दिया सर। उनको he is not, he cannot, I think perhaps he may be communicating over phone only, correct? यस सर। आप अभी तो हिंदी फ़ोन से बात किया होगा। अभी उनको इंटरनेट से बात करना ये सब उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। इज़ इट नॉट?
जी, जी सर। जी, कोई जी सर। बट एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत कुछ बड़ा-बड़ा डेवलपमेंट्स हो गया। मेरे को जानते हैं फ्यूचर पॉइंट करके एक दिल्ली में एक कंपनी है। उन लोग पूरा जी, जी सर। ऑनलाइन में करते हैं। वो तो मेरा रिटायर्ड स्टाफ था और मेरा कस्टमर भी था। जब हम दिल्ली में काम किए तब he she was having account in our branch and she worked for our bank before marrying this astrologer. Very nice. So astrology का बारे में आपको एक्सपीरियंस क्या है? सर सर एक्सपीरियंस सर एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे तो सर बिल्कुल भी नहीं है सर। मैंने पापा से कहा था कि मुझे थोड़ा-सा इस बारे में आइडिया दीजिए, तो उन्होंने कहा एक बार तुम तुम्हारी पढ़ाई फिनिश कर लो, उसके बाद में फिर मैं तुम्हें डिटेल से इसके बारे में अच्छा, अच्छा, पढ़ाऊँगा। अच्छा, अच्छा, that is right. But my question was different. What are your views on astrology? आपका एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या ओके। कैसे सोच रहे हैं? ये तो सही है, नहीं सही है, उससे बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, ऐसा मैं भी पूछ रहा हूँ। ओके सर। सर एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा व्यू है कि सर जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाकर के किसी चीज़ के लिए डायग्नोस करवाते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पर ये इश्यू है, अगर हम इसके लिए इस डिज़ीज़ के लिए ये दवा लेंगे तो इससे हमें आराम मिलेगा। उसी तरह से सर हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उसके लिए हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि आगे फ्यूचर के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस फील्ड के अंदर अगर हम ट्राई करें तो हमें ईज़िली सक्सेस मिल जाएगा। तो सर वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमें एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव गाइडेंस देता है सर। Good, very good. You told nicely. बढ़िया, excellent. Now, थैंक uh, यू सर। why did you choose commerce instead of इंजीनियरिंग बिकॉज़ दैट इज़ अ नॉर्मल ट्रेंड सबको तो इंजीनियरिंग में जाना नहीं होने से मेडिकल में जाना। आप व्हाई डिड यू यस गो सर। फॉर दिस? सर एक्चुअली उस टाइम जब हमने 10th के बाद में 11th में सब्जेक्ट चूज करने का टाइम आया, तो सर इंजीनियरिंग के लिए जो क्रेज था सर वो एकदम डाउन हो चुका था सर। वहां पर जहां भी हमारे आसपास में जिससे भी हमने कंसल्ट किया, तो सबसे हमें यही सजेशन मिला कि इंजीनियरिंग के लिए शायद अब स्कोप कम होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई फिर हमने कॉमर्स के लिए चूज किया सर। और कॉमर्स में इंटरेस्ट की बात सर ये है कि शुरू से ही जब भी कोई नया सब्जेक्ट सर 11th के अंदर हमें फर्स्ट टाइम कॉमर्स से एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट्स है साइंस और मैथमेटिक्स, तो सर साइंस के स्पेसिफिकली बात करें तो इतना अच्छा स्कोर और इतना इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से सर कॉमर्स को चूज किया। ओह, गुड, एक्सेलेंट। एंड were you studying chartered accountancy during your degree also? सर यस, बैचलर्स डिग्री के टाइम पर सीए कोर्स कंटिन्यू था सर। Super, good. Did you join some institute and prepared or you learned by yourself? सर कोचिंग लिया था सर। अच्छा, good, जी सर। excellent, very good. Now, what are you doing after completing your chartered accountancy? Acha, sorry, I started asking in English. You answer me in Hindi, no सर नो problem. No, नो बताइए. प्रॉब्लम सर, आई कैन अंडरस्टैंड। जी Yeah. सर। सर सर मेरा सीए कोर्स कंप्लीट होने के बाद में सर मैंने एक सीए फर्म के साथ में वर्क किया। एंड ईयर 2020 दिसंबर 2020 में मैंने वहां से ड्रॉप किया सर। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। अच्छा, गुड। जब आप सीए फर्म में काम करते थे, आपका नेचर जी ऑफ सर। वर्क क्या था? सर स्कूल ऑडिट्स था, और दूसरा सर जो जेबीवीएनएल है, जो रेवेन्यू डिस्कॉम्स है सर, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स है, वहां पर रेवेन्यू ऑडिट था सर। तो एक स्कूल ऑडिट्स और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स में रेवेन्यू ऑडिट्स। अच्छा, can you tell me something about that audit? What is that audit? How you were doing it, and what is the use for the customer? Yes, sir. Sir,
जो रेवेन्यू ऑडिट हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में करना होता था सर, वहां पर हमें सभी जो कस्टमर्स थे उनके रेवेन्यू अकाउंट, जिस तरह से जो हमारी बिलिंग होती है उसके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रेवेन्यू लीकेज है सर, उसे आइडेंटिफाई करना होता था। तो सर एक सेंटर पे लगभग 40 to 50,000 अकाउंट्स होते थे, जहाँ पे हमें उन सभी अकाउंट्स का अराउंड 2 to 3 इयर्स का हमें ऑडिट अलॉट हुआ। तो 2 to 3 इयर्स हर एक अकाउंट के ऊपर हमें वहां से उनका रेवेन्यू लीकेज काउंट करना था सर। और सर दूसरा जो स्कूल ऑडिट्स थी, स्कूल ऑडिट्स के अंदर हमें वहां पे उनके अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और उसके बाद में सर जो उनको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस थी उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर फाइनलाइज करनी होती थी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, आपको And the third फाइनेंशियल, question, sir. टेल मी, Sir, थर्ड क्वेश्चन वाज, yes, the या third question was customer benefit. What was that, sir? या or how, in what way your audit will be of use for the customer? सर कस्टमर के लिए ये यूज था कि सर इन केस ऑडिट, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की रेवेन्यू ऑडिट थी, उस केस में अगर प्रॉपर कैलकुलेशन और रेवेन्यू लीकेज कैलकुलेट नहीं होता तो इन फ्यूचर हो सकता था कस्टमर के ऊपर विद पेनल्टी वो चार्ज किया जाता था। तो रेवेन्यू ऑडिट प्रॉपर टाइम पे जब कर लिया गया तो इस वजह से वो जो पेनल्टी चार्ज होने वाली थी सर, उससे वो सेफ हो गए सर। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट चार्ज होता सर, वो भी उनको नहीं लगाया। अच्छा, वो आजकल तो हर जगह में कंप्यूटर आया होगा। आपका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी में भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं पूरा? सर कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटराइज़्ड हो गया, से जी अ, सर, अब लेटेस्ट, मीटर रीडिंग एंड देन कैलकुलेशन, पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन में ही चलता है ना? जी सर, ये इसी ईयर से हुआ है सर, लेकिन हमारे पास में ऑडिट्स जो था सर वो पुराने ईयर्स का भी था सर, 2011 से लेकर के ऑडिट्स था सर। अच्छा, 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 अच्छा। So, जी very good. Now, what is your knowledge regarding computer and, say, using it in your experience in job? सर, कंप्यूटर्स के बारे में सर जो बेसिक डिटेल्स और जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि किस तरह से कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं, इसके अंदर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हमें हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज होते थे, जैसे सर टैली ईआरपी का यूज हम करते थे। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेरियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि इसका एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड सर, इन सब का यूज हम किया करते थे सर। अच्छा, और इसके अलावा सर कंप्यूटर्स के यूज करके जो डेटा को एनालिसिस करना होता था, जहाँ पे हमें रेवेन्यू ऑडिट्स के लिए जाते थे, तो सर हमें एक उसका सॉफ्ट कॉपी और साथ में हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड किया जाता था सर। उसका एनालिसिस हम उसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके और एक्सेल में ट्रांसफर करते और सर वहां से उसका एनालिसिस करते सर। इस तरह से ऑडिट्स के अंदर कंप्यूटर्स का सर काफी यूज हुआ। yeah, I will come to that Excel later on. Tell me, what is busy जी सर। software? Busy software. सर बिजी सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, से एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए हैं सर, उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। Acha. Oh, good. जी Now tell me about something you said about Excel being used for analysis of balance sheet. What is that about? सर, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट के लिए सर एक्सेल का यूज हम रेशियो एनालिसिस के लिए कर सकते हैं सर, Hmm. कि ताकि हमें कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा सर जो भी हमें रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करनी है, तो सर उसके लिए काफी सारे फॉर्मूलाज का हमें यूज करना पड़ता है, ताकि जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर रेशियोज हमें काउंट करने हैं सर, वो हम विदाउट लेस कैलकुलेशन के साथ में सर इजी और फास्ट वे में कर सके सर, उसके लिए हमें यूज करना होता है। इसके अलावा सर जो वेरियस एनेक्जर्स हमें बनाने होते हैं बैलेंस शीट के साथ में सर, तो वहां से डेटा डायरेक्ट हमारी बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाए सर, उसके लिए हम फॉर्मूलाज का यूज करके और उस प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं सर। Good. अच्छा जी, आपने आपका अचीवमेंट में बोला है, got exemptions in 2 papers in CA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डायरेक्टर्स। ये क्यों, किस चीज़ के लिए आपको जी एग्ज़म्पशन दिया है? सर, एग्जाम्पशन मीन सर मोर देन 60 मार्क्स इन द रिटन पेपर। अच्छा, रिट more than 60 marks in the other papers, correct? सर ये जो दो पेपर्स है सर, ये सीए फाइनल के अंदर टोटल 8 पेपर्स होते हैं सर, उनमें से इन दो पेपर्स के अंदर मेरे 60 मार्क्स से ज्यादा आए थे सर, इसलिए इसमें एग्जाम्पशन लिखा हुआ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। Now, जी you said, best presenter award you had in advanced management and communication जी जी skill सर। scores in ICAI. Can you tell me what is advanced management? सर एडवांस मैनेजमेंट, सर ये
सीए फाइनल के बाद में सर एक कोर्स होता है सर, जहाँ पे जो सीए इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में और सीए फाइनल की डिग्री लेने से पहले सर 15 डेज का एक कोर्स होता है सर। इस कोर्स के अंदर उन्हें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सर एक पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, जहाँ पे वेरियस फैकल्टीज आती हैं और वो उन्हें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वहां उनसे डिस्कशन होता है और वेरियस प्रेजेंटेशंस होती है सर, जिसके थ्रू उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का कोशिश किया जाता है। Okay. And what is advanced? Acha, acha, acha. Advanced management means something related to communication and this only. So I mistook it along with advanced accountancy. वो तो बाद में आएगा. I will come to you later for that. Now, आपका hobbies क्या है जी? सर मेडिटेशन एंड काइट फ्लाइंग। अच्छा. Kite flying. What is your age now? सर 23। 23. अच्छा, आजकल भी आप काइट फ्लाइंग प्रैक्टिस करते हैं? नहीं सर वीक में या मंथ में लगभग 1-2 बार सर। एरिया है हमारे पास में यहाँ चांदपोल एरिया है, जहाँ पर सर लगभग पूरा ईयर ही काइट फ्लाइंग संडेज को होता रहता है सर। अच्छा, एवरी यू गेट दैट मच एयर, दैट मच विंड आते हैं आपको? जी सर, लगभग थोड़ा बहुत तो आ जाता है सर। बट इसका मतलब ये है आपके पास विंड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडक्शन होता है? सर राजस्थान में जोधपुर एरिया और जैसलमेर साइड जो डेजर्ट एरिया है सर, उस एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए विंड एनर्जी के थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन सर जयपुर वाले एरिया के अंदर इतना नहीं है सर, इतना तेज हवाएं सर इस एरिया में नहीं है। ओहो, वेरी गुड, एक्सेलेंट. So what are the other examinations you have written in banks or some other places where you cleared or came up to interview? सर इंटरव्यू के लिए सर ये मेरा सर रियलिटी है सर, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो मैं फेस करूंगा। अच्छा, ओहो, first interview. जी। Then what are the other exams you wrote but you did not succeed? सर बीएचईएल का एग्जाम था और राजस्थान के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही एग्जाम होता है, एक एआरओ का, रेवेन्यू ऑफिसर का, वो एग्जाम भी रिटर्न दिया था सर। उसमें भी सर वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। अपने आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर सब नहीं लिखा? नहीं सर। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नो, डोंट वरी, गुड. नाउ व्हाट आपका सेंट्रल बैंक का बारे में क्या जानते हैं? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर ये इंडिया का पहला ऐसा बैंक था जो कि इंडियंस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था सर। 1911 के अंदर इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था सर। उसके बाद से सर 1969, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1969 में इसे नेशनलाइज किया गया और उसके बाद से ये सर गवर्नमेंट का बैंक है। और सर करंटली टोटल 12 बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज और बैंक्स है, उन पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें से सर सेंट्रल बैंक है। करेक्ट, that is right. Now, do you have some more details regarding how many branches they have and other details? सर अराउंड 4600 ब्रांचेस हैं सर, और जिसमें से मोर देन 50% ब्रांचेस रूरल एरिया में हैं। सर ब्रांचेस के बारे में इतना ही आइडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. Did you go through the balance, I mean website of their bank? Yes sir. अच्छा. Did you go through their balance sheet also? Because you are a CA person, I think you must have had interest. Did you go through that? उसका बारे में थोड़ा बताइए हमको. सर बैलेंस शीट सर अभी जो करंट ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी लास्ट फाइनेंशियल फिनिश हुआ है सर, उसका 4th क्वार्टर का बैलेंस शीट अब तक अपडेट नहीं हुआ है। तो 31 दिसंबर तक का बैलेंस शीट जो कि साइट पर शो हो रहा है सर, उसको डेटा को मैंने देखा सर। तो उससे सर मैंने जो अभी तक मालूम किया सर, जो मुझे मालूम चला उसमें ये मालूम चला है कि सर जो बैंक का ग्रॉस एनपी और नेट एनपी है सर, उसके अंदर रिडक्शन हुआ है। और इसके अलावा जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है सर, उसके अंदर जो करंट असेट और सेविंग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है सर, उसके अंदर कुछ परसेंट इंक्रीज हुआ है सर। जो एनपीएस है सर, उसके अंदर अराउंड
अराउंड 0.50% ग्रॉस एनपीए सर, उसमें अराउंड 0.50% का रिडक्शन है, और नेट एनपीए के अंदर सर अराउंड 0.20% का रिडक्शन है सर। Good. Have you heard of unclaimed accounts? नहीं सर। नहीं सुना है? नहीं सर। Unclaimed accounts are those accounts which are maintained with bankers and not operated for over 10 years. That is, Okay पहले सर, actually जी जी सर। 2 years, if it is not operated, it is known as inoperative account. And 10 साल transaction नहीं होगा तो it is considered as unclaimed account, and it is maintained separately, and some returns have to be submitted to Reserve Bank of India. And in each bank, you have Okay. thousands of accounts, and lakhs of accounts, and lakhs of rupees are there. And every bank is nowadays giving it online. अभी हमारा सेंट्रल बैंक को क्लिक करने से click here for the details. Yeah, it is coming as it is also known as DEAF. DEAF, अच्छा। some depositors education some fund. ओ उसका बारे में आपको जानना जरूरी है, नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए. डिपॉजिटर्स DEA, depositors education advantage fund or something. I will tell you. I am now downloading it. I tell you what it is. 1 minute. DEAF in banking. DEAF का depositor education and awareness fund scheme. अवेयरनेस फंड। जी सर। या आप एक काम कर दीजिए, आप गूगल में जाइए, यू प्लीज राइट DEAF इन बैंकिंग, आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस मिलेगा. बट it should not, computer will mistake it along with the deaf person and all that, but it also tells about what is depositor education and awareness fund scheme. इसका बारे में आता है, उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है? जी जी सर। गुड, वेरी गुड. This one has not come, that list has not come properly. अच्छा, here what is the depositor education awareness fund scheme? ये सब आप पढ़ने से आपको पता हो जाएगा, don't worry. Okay, good. ठीक है। Now coming to your financial this thing, so what are the qualities or traits required for succeeding as a financial analyst? सर फाइनेंशियल एनालिस्ट पोस्ट के लिए जो मेजर स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी सर, जिससे कि इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा बेटर परफॉर्म किया जा सके, तो सर पहली स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी सर एनालिटिकल स्किल्स और एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस, ताकि सर जो डेटा बैलेंस शीट्स वगैरह के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा है वो सब प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकें. सेकंड जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो कंप्यूटर और टेक्निकल स्किल्स, ताकि प्रेजेंट टाइम में जो भी डेटा हमारे पास आता है वो सर पूरा डेटा हमें कंप्यूटर्स के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट और रिसीव होता है सर. तो एनालिसिस दूसरा टेक्निकल स्किल रिक्वायर होंगी सर. थर्ड जो स्किल रिक्वायर होगी वो होगी सर डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट करना. जो भी सर लोन्स वगैरह के लिए फाइल से अप्रूवल होगा सर, उनके लिए जो रेलेवेंट अथॉरिटी है सर उन्हें डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकें, इसलिए सर डिसीजन मेकिंग की जो स्किल्स और एबिलिटीज है वो रिक्वायर्ड होंगी. और सर इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, ताकि क्लाइंट्स और जो रेलेवेंट अथॉरिटी है सर हमें प्रॉपर से उन्हें कम्युनिकेट कर सकें कि किस तरह से और क्या-क्या इश्यूज और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज किसी पर्टिकुलर लोन अप्रेजल के लिए हम दे सकते हैं. Good. So now, are you interested in share market? नहीं सर. Not interested. So theoretical knowledge at least you will be having about the way the stock market systems is functioning. You know about SEBI? Yes. Yes sir. Can you tell me something about SEBI? Sir, SEBI is SEBI का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सर ये जो भी इंडिया में शेयर मार्केट ट्रेडिंग होता है सर उसकी रेगुलेटरी बॉडी है सर. जो भी शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती है सर उन्हें उनकी लिस्टिंग करना
और उनकी लिस्टिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करना, और कंपनीज प्रॉपर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है सर, ये इसका पूरा डिटेल जो रहता है सर वो सीबी के साथ में रहता है। Did you apply for SEBI jobs also? Because many of the boys, they are more happy about SEBI because they pay very well. The salary is very good. You applied? यस सर, यस सर, मैंने अप्लाई किया था, वो मैं बोलना भूल गया था। सीबी ग्रेड ए के लिए मैंने अप्लाई किया था, मैं सर फेज 2 मेरा क्लियर नहीं हो पाया। ओहो, that means आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह में आपका और भी स्ट्रांग होना था ना? सर वो वाला फर्स्ट पेपर तो क्लियर हो गया था सर, सेकंड पेपर जो था उसके अंदर सर मार्क्स अभी तक आए नहीं है, तो आइडिया नहीं है कौन सा एरिया वीक रहा। ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला फर्स्ट फेज था, वो तो क्लियर हो गया था। फेज 2 में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है? नहीं सर। Okay, okay. No problem. Good. That's okay. That's very okay. Now, coming to financial analyst. Can you tell me what is EBITDA? What is EBITDA? Yes sir, earning before interest, tax and depreciation and amortization. Can you tell a few points about that? सर कंपनीज का जब प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाता है तो सर प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अमाउंट्स को रिड्यूस करने से पहले जो प्रॉफिट हमें दिखाई देता है सर उसे EBITDA कहते हैं सर। इस प्रॉफिट का जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है सर वो इन्वेस्टर्स के द्वारा ये चेक करने के लिए किया जाता है कि इस कंपनी का प्रॉपर जो इंटरेस्ट और टैक्स और डेप्रिसिएशन के अलावा जो टोटल अर्निंग्स है क्या वो इतनी है कि ये कंपनी आगे सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। करेक्ट। अच्छा जी, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट cash flow and funds flow? Is a what way it is made use of by companies, in what is the use of that to bankers? जी सर, कैश फ्लो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर जनरली P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को इंक्लूड किया जाता है सर, जहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और उसके एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं, लेकिन सर कैश फ्लो हमें इस बारे में डिटेल एनालिसिस और व्यू प्रोवाइड करता है कि कंपनी के टोटल कैश रिसीव्स कितनी है। कंपनी सर कैश फ्लो के अंदर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कंपनी कितना अर्निंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कर रही है, कहां पर इसे इन्वेस्ट कर रही है और कहां से इसे फाइनेंसिंग अवेलेबल हो रहा है जिससे कि वो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सर इसलिए कैश फ्लो का बैंकर्स के लिए ये यूज है कि क्या कंपनी अपनी एसेट को सेल करके कैश जनरेट कर रही है और फिर उसका यूज अपने बिजनेस में कर रही है, या फिर कंपनी अपने ऑपरेटिंग बिजनेस के थ्रू टोटल सेल्स एक्सेट्रा के थ्रू प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उसका यूज अपने बिजनेस के लिए कर रही है। क्योंकि सर अगर कंपनी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ में ऑपरेट कर रही है तो सर वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक ऑपरेट नहीं कर पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो प्रॉपर जो कैश का वैल्यूएशन है, कैश की एनालिसिस है सर, उसके लिए कैश फ्लो का यूज किया जाता है। लेकिन सर कैश फ्लो के मुकाबले फंड फ्लो का यूज इसलिए किया जाता है कि कैश फ्लो हमें ये बताता है कि हमने कैश का किस तरह से यूज किया, लेकिन फंड फ्लो हमें ये बताता है कि हमने टोटल जो फंड्स हमने कंपनी के लिए अप्लाई किए हैं। तो सर फंड फ्लो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ द फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड। तो सर कैश फ्लो में जहां पर सिर्फ कैश की वैल्यूएशन आती है, सर फंड फ्लो के अंदर कैश प्लस जो हमने क्रेडिट के अंदर वैल्यूज का यूटिलाइजेशन किया है, जैसे डेटर्स के थ्रू कोई वैल्यू आई है जिनका पेमेंट करना बाकी है, सर उन सभी को इंक्लूड करके हम फंड फ्लो को प्रिपेयर करते हैं। Good. What is the use of that to bankers? सर बैंकर्स के लिए सर कैश फ्लो का तो यूज सर बैंक ये चेक कर सकता है कि क्या प्रॉपर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतना है कि ये बैंक को अगर कोई इन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो क्या उस लोन का ये इंटरेस्ट और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करने के लिए एफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे सर। वेरी गुड, वे में यूज होता है सर। गुड। नाउ अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, फॉर दिस सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे हैव अलॉटेड? बिकॉज दूसरा अभी तक मार्क्स नहीं आया सर। मार्क्स नहीं, व्हाट डिड दे टेल इन द एडवर्टाइजमेंट?
that interview will be given 75 marks or 80 marks? उसका बारे में सर ये नोटिफिकेशन में सर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है सर। नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ टेलीग्राम पे कुछ लोगों से मालूम चला किसी ने आरटीआई अप्लाई किया था तो मालूम चला 80:20 का रेशियो 80:20। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड, दैट्स व्हाट आई आल्सो बिलीव। आईबीपीएस में ऐसा ही चलता है, बट सम प्लेसेस दे गिव 25 marks, 75-25, that's okay, fine, good, that is okay. Now, uh, how many siblings do you have? सर वन। What is he doing, or she, what is she doing? सर शी माय सिस्टर, हर नेम इज अलका, एंड वो सर अभी सीए है जो जयपुर में सीए फर्म के साथ में सर वर्क कर रहे हैं। Super, she is also chartered accountant. जी सर। बढ़िया जी, but you don't have to tell the name of the person, जरूरत नहीं. Very happy. अच्छा, she is working in a CA firm. Did she apply for this post? No. नहीं सर, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब। She is not interested in government job. Say why? What is the advantage of government job? What is the disadvantage of government job? See, this is what is happening. You know, by our reply, we get into some difficult areas or confusing areas. For example, there was no reason for you to tell about government job. आपने government job बता दिया. Instead, you could have told she was not interested. बस. And समझ गए आपको reason? Yeah. अभी बताइए हमको what is the advantage of government job, disadvantage of government job. सर एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब सर, एक तो सिक्योर्ड करियर हो जाता है सर। उसके अलावा जो सर दूसरा एडवांटेज हमें हो जाता है कि सर जो प्रॉपर हमें टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रमोशंस और जॉब सिक्योरिटी और डिसएडवांटेजेस के अंदर सर जी, ये डिसएडवांटेज क्या है? सर डिसएडवांटेज सर मुझे तो सर कुछ नजर नहीं आ रहा है। Disadvantage, we can say that the government job is only fixed pay, and there cannot be a higher pay for a person who is working more efficiently. जी सर। समझ गया? और लेकिन आपको प्राइवेट में जाने से तो सपोजिंग यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू जॉइन रिलायंस, आपको तो जरूर अच्छा कैरियर पाथ होगा जहां आप योर सैलरी में आल्सो इंक्रीज. जी सर। It depends. It depends on what is your desire. What is your aim in life? What is your ultimate goal? सर अल्टीमेट गोल सर सर जब ड्यूरिंग कोविड, सर कोविड के टाइम पे सर फर्स्ट वेव था सर, उस टाइम पे सर मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि सर नेशन के लिए कुछ अगर मैं करना चाहता हूँ तो सर गवर्नमेंट जॉब उसके लिए प्रॉपर मेरे को पाथ प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए सर मैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एंटर करूंगा सर, और उसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन लाना चाहूंगा और उसी फील्ड के अंदर आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। Good. So what is your in what way you have helped others during your CA days or after CA days? सर सीए डेज के ड्यूरिंग तो सर जहाँ कहीं भी ऑडिट्स के लिए जाना होता तो कहीं भी हमें कोई ऐसा पर्सन दिख जाता जैसे कोई नीडी पर्सन है तो पे कभी कुछ खाना खिला दिया या फिर कुछ ऐसे कुछ खाने को प्रोवाइड कर दिया सर। और ड्यूरिंग सीए जो हमारे साथ में जो कलीग्स हमारे वर्क करते थे सर, तो वर्क के अंदर कभी कभी ऐसा होता था कि किसी का तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई प्रॉपर कंसंट्रेशन अपने वर्क पर नहीं कर पा रहा है सर, तो उन्हें उनका जो वर्क है सर हम उसके अंदर उन्हें सपोर्ट कर दिया करते। Very good. So what is your involvement in NGO activities? सर एनजीओ में सर वैसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है सर, लेकिन 2020 में जब कोविड टाइम था तो उस टाइम यहाँ एक लोकल एनजीओ है सर, उनसे कुछ टाइम के लिए मेरा रेगुलर सा उनके साथ में कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस टाइम के अंदर मैं उनके साथ में काफी टच में रहा, और जो भी एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट सप्लाईज आती थी सर उन्हें हम एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर सर Very हेल्प good. किया करता था। So you try to tell about that also.
so that you care for the society. ये भी पता हो जाएगा, समझ गया? जी सर। Yeah, in one interview, simply a computer science graduate, and जी सर। she was able to impress the group by her telling her involvement in social service activities. Of course, you must by heart have that ideas. Then only you can try to use that as a tool for getting more marks. समझ यस गया? यस। Yeah. जी सर। Now, um, can you tell me what are the risks banks are facing nowadays? सर करंट जो सिनेरियो के अंदर बैंक रिस्क फेस कर रहे हैं सर, वो है एक Yeah. सर एनपीए का रिस्क सर, लोन्स का जो प्रॉपर टाइम पर पेमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा सर दूसरा मार्केट रिस्क सर, कभी मार्केट सर काफी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ड्यू टू कोविड। और सर इसके अलावा कुछ अनकैलकुलेटेड रिस्क होती है सर, जो कि अनसर्टेन रिस्क है, जिनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, दैट कुड आल्सो अफेक्ट दैट। Good. Now, what do you think will be your job role once you join as financial analyst in our Central Bank of India? सर जॉब रोल के अंदर सर जो लोन्स के लिए अब क्रेडिट लोन अप्रेजल के लिए जो फाइल्स आएंगे सर, उनके अंदर की जो बैलेंस शीट्स और पी&एल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सर, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना कि क्या ये क्लाइंट को बैंक क्या इस क्लाइंट को बैंक लोन दे सकता है और किस अमाउंट का लोन देना चाहिए। अगर इन्हें लोन दिया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होंगी, उन सब का कैलकुलेशन, और जिस इंडस्ट्री से वो पर्टिकुलर कंपनी या क्लाइंट बिलोंग करते हैं सर, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है और फ्यूचर के अंदर क्या इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होंगे सर, उसका कैलकुलेशन करना। इसके अलावा सर जो अप्रूवल अथॉरिटी जो भी होंगे सर, उन्हें प्रॉपर डिसीजन के लिए सपोर्ट करना। Good. ये Good. Now I will come to your Excel. Can you tell me how do you calculate ratio analysis? What are the important ratios you have in mind? यस सर। सर फर्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है सर, वहां से हम जीपी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और सर दूसरा जो रेशियो होगा सर, वो हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर कंपनी के टोटल रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस करते हैं, और इससे सर हमें उसका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट को जब सेल्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जीपी रेशियो आइडेंटिफाई हो जाता है। और जब कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है, प्रॉफिट टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, और नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये सर हमें एनपी रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद में सर और रेशियोज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर बैलेंस शीट के अंदर, उन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सर। एक होंगे हमारे इसके अंदर एफिशिएंसी रेशियो, दूसरे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तीसरे होंगे सर रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, और फोर्थ, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इन 4 पार्ट्स में हम रेशियोज को डिवाइड कर सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स में देना चाहूंगा, तो जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमारा जीपी रेशियो, एनपी रेशियो हो गया, और एफिशिएंसी रेशियो हो गया सर, उसके अंदर हो गया करंट एसेट रेशियो, और दूसरा हो गया सर इसके अंदर हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो और क्विक एसेट रेशियो। सर इनके थ्रू हम कंपनी की जो लिक्विडिटी है सर, वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपनी कितने टाइम के अंदर अपने जो करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज है, उनके क्या रेशियो है कि वो कंपनी कितने टाइम पेमेंट कर पाएगी। Here it is given as profitability, liquidity, solvency, and valuation. पता नहीं whether this is what you had in mind, but liquidity, solvency, profitability, activity ratio लिखा है। Ratios में 4 ratios in accounting, main ratios. Good, very good. You have been able to tell me. Can you tell me something about debt service coverage ratio? सर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कंपनी, जब किसी कंपनी को लोन दिया जाता है तो सर बैंक के द्वारा जनरली डेट सर्विस कवरेज रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू जो कंपनी टोटल अर्न कर रही है, उसके रेशियो में कंपनी हमें लोन का पेमेंट कितने टाइम में कर सकती है, उसकी कैलकुलेशन के लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। आने वाले कितने सालों के अंदर कंपनी कितना अर्न करेगी और पर ईयर हमें कितना पेमेंट कर सकती है। Yeah, who are the users of ratio analysis? सर
यूजर्स में external and कंपनी के शेयर होल्डर external and internal to the company. एक कंपनी का ratios, external people who are all studying and for what, जी जी and internal people who are all studying and for what. जी सर, एक्सटर्नल पीपल्स जो कंपनी के रेशियोज को स्टडी करते हैं सर, उसके अंदर उसके शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो टैक्सिंग और टैक्स अथॉरिटीज होंगी सर, उनको यूज करना होता है। इसके अलावा जो इकोनॉमी के लिए जो कैलकुलेशंस होती है सर, उसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है। और जो इंटरनल यूजर्स होंगे सर, उसके अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जब कंपनी खुद कैलकुलेट करना चाहती है तब कर सकती है। Management, employees and owners. मैनेजमेंट And external users, as you say, financial analysts, retail investors, creditors, creditors का मतलब bankers, competitors, then tax authorities, regulatory authorities, and industry observers. टैक्स अथॉरिटीज आप जानते हैं, ये रेगुलेटरी कौन होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे कि कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो सर उसकी इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी वो अच्छा सेबी होगा, करेक्ट करेक्ट, या मेनली सेबी, करेक्ट, नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट दैट पॉइंट, गुड गुड गुड. And employees also are interested in ratio analysis and all, good. You, yeah, you told this nicely, I am happy. Yeah. अच्छा जी, ये क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आएगा? What financial methodologies are you familiar with for conducting an analysis? No, I am not very clear about it. That's why I'm asking. This question I find in a website. What financial methodologies you are familiar with for conducting an analysis? सर कंपनी का जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है तो सर उसके लिए कैपिटल वर्स्टिंग का यूज करते हैं, तो इसके अंदर वेरियस मेथड्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि एनपीवी मेथड होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो के बीच का वैल्यू डिफरेंस, एक तो नॉर्मल वो मेथड होता है, दूसरा रिस्क इंडेक्स एनालिसिस होता है, इसमें एसेट्स को अलग अलग रिस्क पर कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पर टोटल रिटर्न उनसे कितना आ रहा है और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उसका एनालिसिस किया जाता है। Good. Yeah, I think you have a point in that. Now coming to business, which is the largest bank in our country? The State Bank of India. In terms of number of branches, yes, but in terms of capitalization, market capitalization and all, HDFC Bank is the topmost. Okay. ये एंगल में थोड़ा स्टडी कर दीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड बिजनेस पोजीशन वगैरह में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बैंक्स, ये थोड़ा पढ़ लो जी, बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे एक्सपेक्ट यू टू नो दिस. ठीक है. Yeah. What is this benchmarking? Do you have an experience in benchmarking? If so, when have you used it? I think I asked another candidate also. I forgot what did she tell. What is benchmarking? Sorry, sir. You are not familiar with this? No, sir. I'm not. Okay, 1 minute. Benchmarking is the process of measuring key business metrics and practices and comparing them within business areas or against competitor, industry peers, or other companies around the world to understand how and where the organization needs to change in order to improve performance. समझ गया? I am giving the link for this. What are the 4 types of benchmarking? I am giving to your WhatsApp. I am giving in your WhatsApp. I am also giving in our Telegram page 72020. 1 minute. Kabhi kabhi, I think this is not a
thing which you don't know, you know it, but you are not able to present it properly. समझ गया? सर वो एक्चुअली बेंचमार्किंग वर्ड में कुछ कंफ्यूजन रहा किस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देना. Yeah. It's okay. Fine. This is better than guessing something and telling a wrong answer. So that is, and similarly in an interview, don't worry about you are not answering one or two questions. The confidence with which you answer is what is going to be more important. ओके सर. Yeah. What process do you use to create accurate sales reports? I know you have not had any experience, but you must be able to answer the question how sales reports are to be made. ओके सर. सर आई विल ट्राई. You try to equip yourself for that. Okay. But इतना तो इतना डिटेल पूछेगा नहीं आपको, because this is not directly related to bank, but I am just telling you. Yeah, if you could choose one profit, if you could choose one profitability model to forecast your projects, which would it be and why? Maybe this is something not related to our country, Nakia. Do you have any such answer for this? नो सर. Did you come across the link I have given you for financial analysis interview questions? आपका पास आए? सर वो एक पीडीएफ वर्ड फाइल आया था सर. हाँ, वर्ड फाइल उसका अंदर ही आई जी, ये सब उसका अंदर ही है. ओके. उसको प्रिपेयर कर दीजिए. Otherwise, you are answering everything very nicely. ओके सर. Let me see you through video now. Yeah. Please accept. Hello. यस सर. जी सर एक्सेप्ट. Hello. जी सर मैंने एक्सेप्ट किया लेकिन वो शायद Requesting to switch to video call. Yeah, good. You are a very, I mean, something suggests that you are a very strong contender. Go with confidence, and you are really great, because they won't expect much from you except because you are more or less like a fresher. And only thing is whether you are amenable, whether you are changeable to suit their requirements, and that flexibility only they will consider. Now, if they ask what are your strengths, what you will tell? सर माय स्ट्रेंथ इज आई एम अ फास्ट लर्नर फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग सर आई कैन अडैप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. Only two will not do. थोड़ा और भी बताना है. I am a hardworking person. I am a creative person. I am good in time management. I possess leadership style. I take up responsibilities. I am a good team player also. ऐसा में भी थोड़ा आपका बारे में थोड़ा अच्छा बोलना सीखना है. I know majority of us, we are not comfortable in talking good about us, but here you are going to market your skills. I told in another video also, you are going to market your skills. Correct? जी सर. Good. So इसलिए you have to be more good in creative and all that. अच्छा जी. Good. What is the reason for NPA in banks? सर बैंक के एनपीए का जो मेजर रीजन है सर वो अगर इन्हें एनपीए को पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो पहला पार्ट होगा सर वो इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया गया सर वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाया, पहला रीजन वो है. दूसरा जो एग्रीकल्चर लोन है सर वो है सर जो इंडस्ट्रीज को लोन दिया सर उन्हें तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. लोन जो कि प्रॉपर रीजन की वजह से पे नहीं कर पाए, दूसरे विलफुल डिफॉल्टर्स और तीसरे सर जो फ्रॉड्स के केसेस हैं. तो एनपीए में जो मेजर पार्ट है सर वो फ्रॉड्स की वजह से हो रहा है सर. Which is the famous big fraud case that has come now? सर शिपयार्ड कंपनी लिमिटेड. ABG Shipyard. ABG शिपयार्ड. Yeah. Now, what do you know about future retail business problems? वो भी prepare कर दीजिए आप. Perhaps you don't know.
perhaps you don't know. Some Biani, Kishore Biani is the owner of that, and he was running that, say, retail stores like various. You know about that? Big Bazaar. Huh? Yes, sir. Please tell me something. I don't yes sir, I don't know the proper case, लेकिन कुछ ऐसा idea है कि सर बिग बाजार की जो owner company है, बिग बाजार, correct, बिग बाजार. So इसका बारे में थोड़ा पढ़ो जी, because it's a hot case that is there, because there is a conflict between Reliance and Amazon. Reliance and Amazon, they are not permitting some this thing. Now the company is to be liquidated, and the creditors did not approve of certain things which किशोर बियानी वांटेड. सो सम सच थिंग, उसका बारे में गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिए. जी सर. गुड. व्हाट इज नीति आयोग? सर नीति आयोग सर जो इंडिया में सर पॉलिसीज फॉर्म होती है सर, उनके लिए सजेशंस देने के लिए सर नीति आयोग को फॉर्म किया गया. हु इज द चेयरमैन ऑफ दैट? सॉरी सर, नो आइडिया. नीति आयोग chairman is our prime minister. Okay. Prime minister is the chairman of Niti Ayog. Then there is one Amitabh Kant. He is the CEO of something, and another person has changed now. That's why I'm asking. Vice chairperson name, now new person is Dr. Suman K. Berry. Dr. Suman K. Berry. The previous person was Dr. Rajiv Kumar. Good. आपका राजस्थान राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स पूछने से बोलना है. थोड़ा सर्च इन गूगल करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू राजस्थान मन में रख लीजिए. Mainly relating to business and something other than that, COVID वगैरह वगैरह. ठीक है? Very good. I am happy with your interview. You are doing very well. After the interview, please send me the list of questions they are asking. You are doing very well. Okay, sir. अच्छा, regarding this NPA का समय पर unnecessarily you brought agriculture. Don't tell, because that is a priority sector. उसका अब मत बोलना है. You say what is the reason for NPA is that number one, the crisis in industries were on a lack of profitability or loss in some companies, maybe because of change in methodology, change in preferences of people, and change of likes of people, as a result of which profit has come down. So NPA, that is genuine. Another one is willful defaulter, similar to this ABG shipyard where the fraud was made. And so please learn about ABG shipyard fraud case. Okay, sir. Also know about SURFACE Act, how it is to be implemented by giving notice, taking possession and all that. Also know about insolvency bankruptcy code. Okay, sir. Very good. If you know that, that must be sufficient. Any other question you have in mind? Not as a real interview, not as a real interview, as a mock interview. पूछ लीजिए. Sir, I don't have any question. Good. Now I will ask some questions in English. Next 5 minutes. You will answer only in English. Okay, sir, I will try. Tell me about your college days. Sir, during first year of my college, I was a regular student, and after that, due to I was in practice in internship of my CA, I have switched to non-collegiate student. So in the first year of my college, I've attended around 50% classes, and the classes and the teachers were, I would say that the students were less in comparison that they should be, but and
Here, also cooperative. no. Here, for this question, you started off nicely, but why do you have to tell about you are not being a regular student, वगैरह वगैरह? जरूरत नहीं. But you can simply say, I studied in this college, BCom, and I scored this much percentage. And uh, while studying BCom, I was also preparing for chartered accountancy. That itself will sufficient. You don't have to reveal something more or less and all that. समझ गया? Okay. Yeah. So can you tell me some this perhaps you may not be able to answer. Can you tell something about LIC IPO? Sir, LIC IPO is going to be launched in month of May 2020, and LIC is also 2022. 2022, and LIC is also offering to its current policy holders their shares at less than market rate of 50 rupees less than the market rate. Good. So this will be the No, but here, largest IPO of India. what is the share price you are expecting? It has come Sir, in it is paper. around 900. Good. 900 to 950. Good. This will do. Excellent. Very nice. That is nice. Now, how do you imagine yourself 10 years from now? What do you want to be? Sir, after 10 years, sir, I will be on a position of sir, I would be on in a leader's position, and I will be sir, I would say that I would be on a position of a leader and would be No. perfection Instead, you can say in central bank interview, you can say, in case I get appointed as a financial analyst, I see myself as assistant general manager because I would have learned the basic necessities of work relating to the say working in a bank, and I'm sure I would have been promoted to AGM. Okay, sir. Yeah, good. This is sufficient. You are answering very well. Do you have any doubts? I will rate this interview very well. I will rate this interview very high. If at all I give less marks, I will give 8.5. If I give more, I will give 9.5. But much depends on the marks you have scored in the written test and also this. Yes, so best wishes. I wish you success. Thank you. I wish you success. And I don't know. Ironically, only 3 or 4 of you have come to me for financial analyst interview, and all of you are from Rajasthan. Why? I don't know. All of you, 2 girls and 1 boy. Very interesting. Very interesting. But of course, Bank of Maharashtra, many others are coming. That is for scale 2 posts and all. But for this financial analyst, I am not. I remember only these you 3 people, 3 or 4 only, and all of you are from only Rajasthan. Best wishes. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Sir, one question. One question. Yeah. Sir, the interview will be on virtual conferencing on Zoom meeting. So first I have to sit on my chair, or first I should wait that they will ask me to sit on chair? Oh, see, if it is a virtual interview, you will be entering the room, and as you go and you wish them, as you enter, you will wish them good morning, good afternoon, and smile. That is what is more important. Smile. And Okay. as you go near the chair, they will tell automatically, please take your seat. They will tell you. They will tell you, and you can wait for that. There is nothing wrong. There's nothing wrong. When you go for an interview, of course, only in IT companies interviews, we suggest people to take the chair before they are offering also. There, we look at it as more confidence. Okay. But here, since we are in a government setup, normally we expect the interviewees to wait till we tell them,
or that way. It depends. It'll automatically go. That's not a big issue. Okay, sir. See, for example, Okay, sir. when you sit also, you should sit without making much noise. Like you should not pull up your chair and all very fast. Otherwise, you are a bright student. You will do well. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And I wish you succeed, but keep me informed about the questions. Let Yes, us sure, sir. let us see. Best wishes. But we are expecting Thank you. these. I have asked you only questions which you can expect there. Sometimes they may go out of the way also. Don't worry about it. Try to answer whatever you know correctly. Whatever you don't know, accept you don't know. Nothing wrong. Supposing you ask me about chemistry, I have to say I don't know. Yes, sir. Best wishes. You will do well. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.